जितेबाला मुझे कैंसर जो यूट्यूब चैनल ओपन करी मुझे भावुची कि जब से मुझे 5टा मिस्टेक जब न करता मो चैनल में 2,50,000 सब्सक्राइबर्स नुह पाखापाखि एवं 5 लाख सब्सक्राइबर हो सारे आम चैनल में कि कौन करें से भी मुझे भाई गोटे बिगिनर ही थी तो से मुझे कॉमन 5 मिस्टेक्स मैंने कर सारी थी जो मो चैनल में 5 लाख नुह तार 50% लेस सब्सक्राइबर होगी तो मुझे चाहूँगी आपण मैंने भी यही कॉमन 5 मिस्टेक को अवॉइड करूँ आ सिंपल कथा आप तो नुआ यूट्यूब चैनल थी से 50 100 150 एति व्यूज आसपर व्यूज स्टॉप हो जाऊ तो आपण मैंने को मिस्टेक से कर तो आपण मैंने तो निहत वीडियो को देखा कथा एंड पर्यंत तो आपण मैंने भी जानीपारे आप मैंने आ भर को कौन मिस्टेक्स कर अवॉइड कले आप चैनल भी रॉकेट स्पीड रे ग्रो कर तो हाँ मुझे आ गए कथा कहीदे आप नॉर्मल टिप्स कथा कहि जमी कि टैग्स डिस्क्रिप्शन हैशटैग दवा ये सी बाकी जो कहते डिस्क्रिप्शन भल से लिख टैग्स से गुड़ा कहबी मुझे एक्चुअल 5 कॉमन मिस्टेक्स कहबी जोटा कि रियल लाइफ में गोटे बिगिनर माने यूट्यूब चैनल जी ओपन करता से एक्चुअली से मिस्टेक को करती जो चैनल स्लो डाउन हो जाए आ गए कथा मुझे कहूँ टिप नंबर 3 जो गोटे एमती कॉमन मिस्टेक जोटा कि समस्ते सब टाइप रे बिगिनिंग टाइम रे करती तो आप टिप नंबर 3 तो बिल्कुल भी मिस करेंगे तो चलो तो वीडियो को आरंभ करिया तो आज का टॉपिक होची द 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट एवरी बिगिनर यूट्यूबर डू इन दैट स्टार्टिंग फेज फर्स्ट मिस्टेक एंड एटा होची चूजिंग द रॉन्ग निश तो मुझे आपको कौन बाय कहूँ भावतु जदि कैंसर जर्नी ओपन न करी गोटे टेक रिलेटेड चैनल गोटे ओपन कर देता तो आपको कौन लगुच मो चैनल ग्रो करता बिल्कुल भी ग्रो करना था उल्टी आउट डाउन ही जाता कारण मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नाला टेक रिलेटेड रे तो मुझे ओपन करता कौन लोग कहता कौन शिखे था लोक को तो मोर तो निजर ही नॉलेज नहीं तो लोगों को शिखे तो सही वे तो लोक मैंने यूट्यूब चैनल कहीं ओपन करते सिंपल यहाँ मुझे चाहे मोर भी इंटरेस्ट मुझे चाहे समस्त फेम पात सेकेंड हूँ अर्निंग यूट्यूब चैनल ओपन करके लोक मैंने पैसा इनकम करें तो से लोग मैंने कौन करते ना आइदर ऑनलाइन अर्निंग रे गोटे चैनल खोल दिखती ना गोटे टेक रिलेटेड चैनल खोल दिखती कारण ये दुटा कैटेगोरी बहुत माने अर्निंग थाए आरपीएम सीपीएम सब हाई थाए तो लोक मैंने बेसिक नॉलेज भी न थाए ना से ये दुटा चैनल ही ओपन कर दिए कारण भावती चैनल ओपन करदे वीडियो पकईदे पैसा आज के आसो कि गोटे जिन आप रियली भावतु जब आप नॉलेज न गोटे बेसिक सा नॉलेज जब आप कहे कौन लोक को एजुकेट करेंगे कौन तो मुझे कहते जो थे आप पर्सनल इंटरेस्ट थी मैं निजर किसी स्किल्स थी से टॉपिक आप वीडियो बनातु लेट्स कंसीडर गोटे कुकिंग जब आप भल लगे तो कुकिंग रिलेटेड वीडियो बनइब जदि जन को सिंगिंग बढ़िया भल लगे तो से गीत बोलिकी अपलोड करके वायरल हो पारे सेमती किसी ना किंतु प्रोब्लेम हूँ आप गोटे बेसिक नॉलेज दरकार आईटा हूँ गोटे फर्स्ट मिस्टेक जोटा कि समस्ते बिगिनिंग यूट्यूब कैरियर में सब करते दिस सेकेंड मिस्टेक एंड एटा हूँ द क्वालिटी ऑफ ऑडियो जब गोटे लोकटे तार फर्स्ट यूट्यूब चैनल ओपन करे बहुत जिन फोकस करा पड़ता है लाइटिंग वीडियो क्वालिटी ऑडियो एडिटिंग बहुत जिन किंतु सबुठ मेन जिन जो फोकस करा दरकार बिगिनिंग माने स्टार्टिंग टाइम रू तो सहीटा हूँ ऑडियो कारण ऑडियोटा माने एते पावरफुल जिन जोटा कि आप 20 to 30% माने मैटर करे आप वीडियो वायरल जापे एवं गोटे जिन भावतु गोटे लोकटे तार फर्स्ट नुआ यूट्यूब चैनल ओपन कला से पूरा फर्स्ट वीडियो तार भर्ती एडिटिंग कर तार बढ़िया से एडिटिंग कर ऑडियो क्वालिटी पूरा बेकार अच्छी आप कौन लगे लोक तार देखिए वीडियो पूरा एंड पर्यंत बिल्कुल देखिए किंतु से गोटे लोकटा तार फर्स्ट यूट्यूब चैनल ओपन कर मिनिमल एडिट कर वॉइस क्वालिटी पूरा बढ़िया रखी तथापि लोक तार एंड पर्यंत लिखे कारण तार ऑडियोटा पूरा क्रिस्पी अच्छी तो बहुत भल लगे शुणा तो लोक मैंने एंगेज होकर रही तो ये आप भावते बिना माइक रे भल ऑडियो रेकर्ड करवा केमती ना आप गोटे काम करेंगे आपड़ जो गोटे बेस इको नथिबो से जगह नहीं सुट करेंगे मैंने घरे पूरा भर्ती गोटे रूम मैंने पूरा भर्ती जिन पत्र अच्छी से जगह सुट कले बेस इको हेनी आजकल तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर्स भी अच्छी एआई प्लेटफॉर्म अच्छी जो आप क्रिस्पी ऑडियो भी पाइपर तो मुझे आपको यही गोटे बढ़िया वीडियो भी आनी आप विदाउट माइक इन्वेस्ट करी माइक को इन्वेस्ट न करी आप गोटे बेस्ट ऑडियो क्वालिटी केमती पाइपर तो ये पर्यटन आप मन रखु ऑडियो बहुत मैटर करे तो आप नेक्स्ट वीडियो आप ऑडियो क्वालिटी की सब इनक्रीज करने को चेष्टा करेंगे मिस्टेक नंबर 3 एंड यही मिस्टेक जब किए कर सार्च तो सहीटा तो आप चेंज करें बट जे करने जाऊँगी सी ए अटकी जान ये मिस्टेक केवे भी करेंगे कारण जदि मिस्टेक आप कले कि भूल जब आप कले तो आपको व्यूज तो छाड़ समस्त तरफ खाली हेड ऊपर हेड ही मिल
ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ କଥା ତ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଅର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଲୋଗୋ ଖରାପ ବା ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଖରାପ ବା ଚ୍ୟାନେଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆପଣ ଭୁଲଭାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନୁହଁ। ସେଇଟା ତ ପୁଅର୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ এইটা হচ্ছে যদি আপনার গোটে বড় ক্রিয়েটরকে কপি করিকি তো সি যা করছেন যদি আপনার ডিটো সেয়া কলে সেইটা কুযায় পুরো ব্রান্ডিং। তো মু এবে আপনার এইটা বলছি আপনার তাঁকঠু নিজে শিখুনি বা সে যা করছেন আপনার সেইটা করতুনি। পয়েন্ট হচ্ছে এয়া যে আমি তো মানে স্টার্টিংরু সবু কিছু শিখিকি আসিনথিবা দুনিয়াକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିକି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ୱେରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଲେଟ୍ କନସିଡର ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯିଏକି ମନୋଜ ଦେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଏବେ କିଙ୍ଗ। ତ ତାଙ୍କଠୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖୁଛେ ତ ସେଇଟା ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖୁଅଛି। ତ ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସେ ଯାହା କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଉଛି, ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ମାନେ ଆଗ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଜାଣୁଛି ନାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷଟା କହୁଛି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା କପି କ୍ୟାଟ୍ କଲା ତାକୁ କପି ହିଁ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟରକୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ପକେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କପି କ୍ୟାଟ୍ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଯଦି ଇନଫାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଯଦି ଭଲ ଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଠେଇଥିବେ, ଫିର୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଯିବ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକ ତ ଭାବିବେ ଆପଣ ତ ତାକୁ କପି କରି ପକେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଡାଉନଫଲ୍ ହେବା। ଆଉ ଏଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କୁହାଯାଏ ପୁଅର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ। ମିଷ୍ଟେକ୍ ନମ୍ବର 4 ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ଟପିକ୍। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଜର୍ନି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାନ୍ତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ମି বা 10 facts about me বা who am I বা এইসব জিনিস যদি মা যদি পকাইଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା, କେବେ ବି ଭାଇରାଲ୍ ଯାଇନଥାନ୍ତା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ମାଆକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ମାଆର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନଥିଲା, ମାଆକୁ କେଉଁ ବି ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ନଥାନ୍ତା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ ଆମେ 7-8ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ପକେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି କେହି ବନେଇ ନଥିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଭିୟୁଜ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମେକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିପଲ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍, ମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ଧର ମୁଁ ଏବେ ଟେକ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଗୋଟେ ଏବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଉଛି, ତ ଯଦି ଏ ଟପିକ୍ରେ ମୁଁ ବନେଇବି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ ହାସଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ ଇଏ ଦେବେ ସିମିଲର ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ବନାନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଟା ମୁଁ ବନେଇବି ତ ଲୋକମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦରକାର। ତ ଆପଣ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିକ୍ ୱେରେ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ହିଁ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନା। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ସା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବେ, କହିବେ ମୁଁ ତ ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲାନି। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଠି। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ରେକ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମେ ବି କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ବି ଯାଇପାରେ। ମିଷ୍ଟେକ୍ ନମ୍ବର 5 ଦି ଲାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବଟ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲାଇଂ। ତ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକଟା ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓପନ୍ କରିସାରିକି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ 50-100-150 ଏତିକି ଆସୁଛି, ତାପରକୁ ଆଉ ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସିଏ ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ ହାଉ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଅନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖୁଥିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ କ୍ଲାରିଫାଇଂ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ବି ହେଇଯିବ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେଇ ଲୋକ ବି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନଥିବ ତାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ। ବାକି ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଯାଉଥିବ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଶିଖିଗଲି ଛାଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ପରେ ଆଗ ମୁଁ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଯାଏ। ତ ଏଇଟା କେବେ ବି କରିବେନି। ସବୁବେଳେ ଯାହା ଶିଖିଲେ ସେଇଟା ତାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପ୍ଲାଏ ହିଁ କରିଦେବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି 1ରୁ 100% ସବୁ ଶିଖିବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ଆମେ ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇମ୍ପସିବଲ୍, ସେଇଟା କେବେ ବି ପସିବଲ୍ ହୋଇପାରିବନି। ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଧର ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିଛନ୍ତି କି ହାଉ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଅନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ବି ଦେଖିବେନି। ନେକ୍ସଟ କେବେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଦେଖିବେନି ଯେ ହାଉ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଅନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ଯାହା ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଶିଖିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଲା ଯେ ଭାଇ ଏ ଟପିକ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ୟୁଜ୍ କଲି ତାହେଲେ ମୋ ଟପିକ୍ ଗ୍ରୋ କରିଯିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନିହାତି ଗ୍ରୋ କରିବ। ଆଉ କେବଳ ଶିଖୁଥିବେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନଥିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡାଉଟ୍ ଆଜି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଟପିକ୍କୁ ଧରିନି, ଯେମିତିକି ହାସଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଅ, ଟାଇଟଲ୍ ଭଲ ରଖ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଭଲ ରଖ, ଏଗୁଡ଼ା କରେ, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ବି କହୁନି, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି। ମୁଁ କମନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ 5 କମନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ କହିଲି ଯେଉଁଟାକି ବିଗିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ସବୁ ଶିଖି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାକ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ବି କରନ୍ତୁ। ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ।
ଆଉ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲି।